आज हम करेंगे 15 जून का ड्राइवर पेपर जो हुआ था। तो आप सभी अपना अपना जो ओपिनियन कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज हम बी सेट करने जा रहे हैं फुल साल, तो इस वीडियो में एंड तक बन रहें। जहां आपको लगेगा कि ये वाला आंसर गलत है, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट रख सकते हो। तो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं शुरू। व्हाट डज द फॉलोइंग सिंबल मीन? ये जो टायर दिया गया है इसका क्या सिंबल था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा कंपल्सरी स्नो चेन। सी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट? ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए पार्ट फॉलिंग रॉक। फॉलिंग रॉक इज द राइट आंसर। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट डज द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट? इस क्वेश्चन पे मेरे को लगता है कुछ जो बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, वो धोखा खा गए थे कि इसका राइट आंसर होगा एच इंटरसेक्शन, पर इसका राइट आंसर जो था वो बी पार्ट था, नो थ्रो साइड रोड। बी इसका सही आंसर था। अगर आपको लगा था कि ये एच इंटरसेक्शन, तो आप गलत थे। इसका राइट आंसर बी पार्ट था, जो था नो थ्रो साइड रोड। ऐसे ही चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे भी बच्चों ने काफ़ी गलती की थी। ये स्टॉक्स कोई भी आंसर नहीं था। इसका राइट आंसर डी था, रेस्ट्रिक्शन एंड्स। डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है फॉलोइंग रूट मार्क्स फॉलोइंग रूट मार्कर इन रोल रिप्रेजेंट? तो इसका काफ़ी बच्चों ने सही आंसर दिया था सी पर कंपल्सरी कीप राइट। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो है द चेस्ट कंप्रेशन टू वेट रेशियो फॉर CPR इन एन एडल्ट पर्सन इज? तो इसका सी पार्ट राइट आंसर था। सी इज़ द राइट आंसर। सी सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सेवन्थ की बात करें। सेवन्थ, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन कैरिंग फॉर ए बर्न पैसेंजर? तो राइट आंसर ए था इसका। ए इज़ द राइट आंसर। अप्लाई कोल्ड वाटर ऑन द बर्न्ड एरिया। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन की बात करें। एट्थ क्वेश्चन है ड्राई बैंडेज इज कॉमनली यूज टू? एट्थ क्वेश्चन है कि ड्राई बैंडेज किस चीज़ में काम की जाती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, स्टॉप ब्लड फ्लो। बी पार्ट इज द राइट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर? तो सी पार्ट इसका राइट आंसर था। कोई इसका काफ़ी बच्चों ने डी भी लगाया था, पर इसका जो था सी पार्ट सही आंसर था। एथ क्वेश्चन में बी पार्ट राइट आंसर था। ठीक है, स्टॉप ब्लड फ्लो करके। अगर टेंथ का देखें, तो टेंथ का जो मैच था फॉलोइंग था, इसका इसका बी पार्ट सही था। बी पार्ट सही वाला था, जो कि बिल्कुल फुली मैच कर रहे थे। अगर आप बीच में से देखोगे, थर्ड वाला CPR नॉट ब्रीथिंग और नॉर्मल ब्रीथिंग नॉर्मली, तो आप ये मिलता जुलता क्वेश्चन था सिक्स क्वेश्चन से। ठीक है, एक बार आप चेक कर सकते हैं आपके फुली कितने मार्क्स बने। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कितने कितने नंबर बन रहे हैं। इलेवंथ क्वेश्चन पे आ जाइए। इलेवंथ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज अप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन विच सीट बेल्ट ऑफ ए कार वर्क्स? तो इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर था सी पार्ट, इनर्शिया। इनर्शिया इज द राइट आंसर। इनर्शिया इज द राइट आंसर। ट्वेल्थ क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल यूज इन द व्हीकल एयरबैग? इसमें कौन सा केमिकल डाला जाता है एयरबैग में? तो इसका राइट आंसर था ए पार्ट, सोडियम एजाइड। द लैब बेल्ट पोर्शन ऑफ ए कार पैसेंजर सीट बेल्ट शुड बी रेस्ट सिक्योरली। तो इसका राइट आंसर था बी पार्ट, अक्रॉस द पैसेंजर हिप्स। ठीक है, फोर्टीन्थ की बात करें। विच among the following effect is mostly observed after consumption of alcohol while driving? तो A is the right answer. Increase reaction time and reduce balance. A is the right answer. 15th question है which of the following compound is used while conduction?
ब्रीथ एनालिसिस टेस्ट बाय पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइविंग। तो राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। 16th क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास मोस्टली यूज एज विंड स्क्रीन ऑफ ए कार। तो राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, लैमिनेटेड सेफ्टी। लैमिनेटेड सेफ्टी इज द राइट आंसर। 17th, इसकी जो स्टेटमेंट है वो बी इज द राइट आंसर। बी इसका जो राइट आंसर रहेगा। स्टेट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। दूसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। 18th है, after consuming alcoholic drinks before driving, which of the following approach can reduce the blood alcohol concentration of a driver। तो ए इसका राइट आंसर रहेगा, टेक टाइम, ठीक है। Which of the following color code band is used for the identification of CO2 carbon dioxide content in the fire extinguisher। तो इसका राइट आंसर वाइट नहीं था, वो ब्लू था। ब्लू इज द राइट आंसर, ठीक है। ब्लू, no sorry, black is the right answer। While driving, if your car involved in an accident and hurting a pedestrian, you should, तो आप क्या करोगे। बी इसका सही आंसर रहेगा, टेक द पेडेस्ट्रियन टू द हॉस्पिटल एंड रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन। ओके, बी इसका राइट आंसर था। 21, compared to the dry surface, stopping distance of a vehicle on a wet surface is, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए पार्ट। 22 है, द विजिबिलिटी डिफिकल्टी दैट द ड्राइवर फेसेस ड्यूरिंग नाइट ड्राइविंग इज ड्यू टू, किसकी वजह से। तो इसका राइट आंसर रहेगा ग्लेयर विजन, राइट आंसर बी होगा इसका। 23, ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व इफ द रोड इज केप्ट हॉरिजॉन्टल across the alignment then the pressure of the outer wheel of a vehicle will be, तो इसका राइट आंसर ए होगा, मोर देन द पैसेंजर, सॉरी, मोर देन द प्रेशर ऑफ द इनर व्हील। ए इसका सही आंसर रहेगा। 24 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लोथ्स आर सीन इजीली बाय ट्रैफिक एंड सेफ टू वियर एट नाइट ड्राइविंग। तो राइट आंसर इसका सी होगा, ब्राइट फ्लोरोसेंट क्लोथ्स। 25 की बात करें, स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, ब्लैक टॉप बिटुमिनियस रोड हैव बेटर विजिबिलिटी एट नाइट। तो स्टेटमेंट 2 का ये है कि स्टेटमेंट 2 क्या कहती है, सीमेंट कंक्रीट रोड हैव पुअर विजिबिलिटी एट नाइट। तो इसका राइट आंसर डी होगा, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इंडिविजुअली फॉल्स, दोनों गलत हैं। 26 की बात करें, बेस्ड ऑन देयर वेवलेंथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ द लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर विजिबिलिटी ड्यूरिंग फॉग। 26 का येलो इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। 27 की बात करें, 27 का ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इंडिविजुअली ट्रू। 28 की बात करें, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल along the road is more than the movement of wheel circumference while applying sudden brake in wet road may cause off। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, बी इज द राइट आंसर, skidding। 29, when a vehicle traveling on wet road at high speed and a thin film of water gets between the tire and the road surface resulting, तो इसका राइट आंसर होगा डी पर, डिक्रीजेस ट्रैक्शन एंड कंट्रोल, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। 30 क्या है, which among the following force exerted on the cable when a car towing another car by using a cable। 30 का आंसर सी है, टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स इज द राइट आंसर। 31, what does omnibus mean as per the motor vehicle act 1988। 31 का, तो इसका राइट आंसर होगा डी बार, a vehicle which can carry six people excluding the driver। Question 32, as per Indian standard motor vehicle used for the carrying of passengers comprising 9 or more seats in addition to the driver's seat and having a GVW exceeding 5 tons is categorized under category M3। Category M3 is the right answer। 33, question number 33, section 73 of Indian Motor Vehicle Act 1988 deals with application for conduct carry permit, A is the right answer। 34, as per Central Motor Vehicle Rules 1989, a vehicular car bearing black number plate with yellow lettering R, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमर्शियल
vehicles are available on rent for self-driving? B is the right answer. As per Motor Vehicle, question number 35, as per Motor Vehicle Act 1988, maximum speed of N category goods carried vehicle traveling access control expressway is 80 km per hour. C is the right answer. Question number 36, as per Motor Vehicle Act 1988, Section 173, a person aggrieved or unhappy by an award of a tribunal can prefer an appeal to the B is the right answer, High Court. Question number 37. As per Motor Vehicle Act 1988, Section 173, the prescribed time period for filing of appeal against an award of a tribunal is C is the right answer, within 90 days. C is the right answer. Question number 38. As per Central Motor Vehicle Rules 1989, size of number plate of medium commercial vehicle shall be A is the right answer, 34 by 200 mm. Question number 39. As per Central Motor Vehicle Rules 1989, the visual transmission of light in a rear window and windscreen should not be less than 70%. D is the right answer. Question number 40. RTU form number 9 is applicable for. C is the right answer. Application for renewal of driving license. स्टूडेंट्स, आपको कहीं भी लगता है कि मेरा कोई आंसर गलत होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। पिछली वीडियो में आपने अच्छा रिस्पांस दिया, आपने कुछ कमेंट भी किया, तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं उनको ठीक करते जाइए। अगर मेरे से गलत होते हैं आप ठीक करिए, उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये वाला क्वेश्चन नंबर गलत है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। Which of the following is the maximum safe axle weight of a single axle with two-tire vehicle specified by Ministry of Road Transport and Highway? B is the right answer. 7.5 ton is the right answer. Question number 42. Which of the following is the primary greenhouse gas emitted by burning fuels in vehicle? A is the right answer. Carbon dioxide. Question number 43. Which among the following statements correctly represent the Bharat State BS6 vehicular emission norms? C is the right answer. Only 3. Only 3. ठीक है. Third is the right answer. BS6 emission norms are applicable for all category of vehicle including government four-wheeler. Question number 44. Which of the following mode of transportation will have the least negative impact on air quality? Bicycle. Bicycle. D is the right answer. Question number 45. Which of the following pollutants are responsible for acid rain in formation? B is the right answer. Nitrogen dioxide NO2 and sulfur dioxide SO2. Question number 46. Statement 1. PM 2.5 is largely produced by vehicular emission and leading to cardiovascular disease. Statement 2. PM 10 largely produced by dust storms and leading to upper respiratory disease. So A is the right answer. Statement 1 and statement 2 are individually true. Question number 47. Which of the following unit is commonly used to measure the intensity of the sound of a vehicle horn? D is the right answer. जो साउंड की आवाज़ है, हॉर्न की आवाज़ है, हॉर्न की जो आवाज़ है उसको डेसिबल में मेजर किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48. Which among the following options correctly represent the purpose to provide noise barrier along highways? C is the right answer. Reduce sound pollution. Question number 49. Which among the following statements correctly represent the effects of noise pollution? B is the right answer. 1 and 2. Noise pollution can lead to hearing loss over time. And second, noise pollution can disturb wildlife. Question number 50. The carbon monoxide CO and HC and hexane equivalent content respectively of four-wheelers which is manufactured as per Bharat Stage 3 or subsequent emission norms. A is the right answer. 0.5% and 750 ppm. Question number 51. As per Motor Vehicle Act 1988, maximum permissible noise level of a passenger or commercial vehicle with GVW above 12,000 kilos is C is the right answer. 91 decibel A. Okay. Question number 52. इसकी हम बात करें तो इसका सिंपल से B इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार चेक कर लो, बी इसका सही आंसर है। जहाँ आपको लगता है कि ये आंसर गलत है, आप इसकी रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो। ओके, बात करें 53 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 53, ए लर्नर लाइसेंस इज इफेक्टिव एंड वैलिड फॉर ड्राइविंग ए व्हीकल। डी इज द राइट आंसर थ्रू आउट इंडिया। क्वेश्चन नंबर 54, एज पर मोटर व्हीकल एक्ट As per Motor Vehicle Act 1988, a motorcycle with 45cc engine capacity may be driven in public place by a person after attaining the age of 16 years. B is the right answer. 55. Which among the following valid documents should be carried while driving a private vehicle? D is the right answer. सभी ठीक हैं, इसका जो ऑप्शन है सभी ठीक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, एज पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 4, minimum age required to drive a heavy commercial transport vehicle in any public place is B is the right answer 20 years. क्वेश्चन नंबर सॉरी थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। ठीक है, 20 ईयर्स, 56 वाला 20 ईयर्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस ट्रैफिक ऑफिसर कैन सीज अ व्हीकल? A is the right answer. The vehicle is not covered by a valid registration. Question number 58. How many days a driver can drive the vehicle after the expiry of his driving license? B is the right answer. 30 days. 59. Statement 1. A driver can transfer his driving license to the name of other driver depending on the importance of the circumstances. Statement 2. A driver cannot transfer his driving license to the name of other driver under any circumstances. C. Statement 1 is false and statement 2 is true. Okay. Question number 60. What is concluded in section 112 of Motor Vehicle Act 1988? B. Speed limit shall not be exceeded. B is the right answer. Question number 61. Hit and run motor accident is defined under which section of Motor Vehicle Act 1988? D is the right answer. D is the right answer. Section 161. Question number 62. As per Central Motor Vehicle Act 1988, Rule 1989, using mobile phone while driving vehicle shall, D is the right answer, constitute nuisance or danger to the public. D is the right answer. Question number 63. According to the new traffic rule or amendment 2019, under the Motor Vehicle Act, the fine amount for not wearing seat belt is, C is the right answer, rupees 1000. 60, question number 64. इसका इसकी जो स्टेटमेंट सी है, सी इज़ द राइट आंसर। ओके, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। 65 क्वेश्चन नंबर, इन द फॉलोइंग फिगर द मोटर व्हीकल टू विच द सेमी ट्रेलर इज अटैच्ड द व्हीकल क्लासिफाइड एज, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, इन द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेयरिंग आउट ऑफ द कार टायर्स इज, B is the right answer, frictional force. Question number 67. Which of the following options correctly represent the major function of an anti-lock braking system as of a car? B is the right answer. Okay. To maintain tractive force. Question number 68. Which type of mirror is mostly used in a vehicle as a side view mirror? The right answer is a C. Convex is the right answer. Which of the following is the first stage of preventive maintenance of a vehicle? D is the right answer. Inspection and checking. 70. In a tubeless tire of a vehicle, the air is pumped in the space. A is the right answer between the tire and wheel rim. A is the right answer. 71. Which among the following is the most common reason of engine misfiring? D is the right answer. Faulty spark plug. 72. Question number 72. क्वेश्चन नंबर 72 में है सी इज द राइट आंसर। एक बार आप मैच कर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। अगर आपको लगता है गलत है तो कमेंट बॉक्स में अपना जो राइट आंसर है वो बता दो।
73. When the choke is applied, the fuel primarily comes out from the main jet. A is the right answer. 74. Which of the following is primary function of a brake fluid? B. Option B is the right answer. Power transmission. Question number 75. The shape of the fast moving car should be designed in such a way that the airbag is minimum. C is the right answer. Among the following options, what are the question number 76. Among the following options, what are the basic characteristics or properties of a brake fluid? Option A 1 and 3. Low viscosity and high boiling point is the right answer. A is the right answer. Question number 77. Which of the following instrument is commonly used by the traffic police to measure the speed of a moving vehicle? Option C. Leather gun. Question number 78. The ease with which petrol vaporizes is called volatility. D is the right answer. 79. A carburetor of an automobile is used to supply. C is the right answer. Petrol and air. Question number 80. Which of the following options correctly refers stroke of the engine? Option number A. Travel of piston between TDC and BDC. Question number 82. The correct number of revolutions of crankshaft to complete the working cycle of a four-stroke engine is 2. Question number 83. Which of the following options is correctly represent the basic variations between? Option number D. Airflow decreases and fuel consumption increases. Question 84. Flooding in the carburetor of a motor vehicle is typically controlled by floor. Float is the right answer. Question number 85. Question number 85. इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ए है. Segment 1 and segment 2 are individually true. Question number 86. Which of the following types of the battery commonly used in electric vehicles? Option C. Lithium ion is the right answer. Question number 87. A vehicle of mass 300 gm is moving with a velocity of 18 km per hour, then it has a momentum of A is the right answer. 15 kilogram per second. ठीक है. A is the right answer. 88. Which of the following technology which of the technology being used for electronic toll collection on highway? B is the right answer. Radio frequency wave technology. ठीक है. B is the right answer. RFID. 89. Question number 89. Which of the following is used to supply power to starter motors of a diesel engine? Battery is the right answer. C is the right answer. Question number 90. Question number 90. ठीक है. इसका बी पार्ट इसका सही आंसर रहेगा. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 91. व्हाट डज एप्लीकेशन आरसी ऑफ ए व्हीकल स्टैंड फॉर? तो इसकी फुल फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रहेगी. ठीक है. बी पार्ट इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 92. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेशनल हाईवे 44. 93. Vehicle proceeding from opposite direction should be allowed to pass through. A is the right answer. Your right side. Question number 94. In which of the following road driving in reverse gear is prohibited except any special circumstances? B is the right answer. One-way road. Question number 95. While approaching a roundabout, which of the following traffic has most priority of right away? C option is the right answer. Traffic already on the roundabout. Question number 96. Which of the following action is most important before applying brake to stop vehicle? B is the right answer. Use the mirrors. Question number 97. Which of the following factor of a vehicle has significant influence on extra widening of a road at horizontal curve? D is the right answer. Length of a wheelbase. Question number 98. The bus covered first 120 km at a speed of 20 km per hour and then covered the remaining 160 km at a speed of 40 km per hour. Then its average speed is. B option is the right answer. 28.0 km per hour.
Question number 99. When the maximum number of cars have to be parked, then the preferable type of parking used is C is the right answer. C option is the right answer. 90-degree angle parking. Question number 100. The car driving initially at 20 km per hour speed. Now driver increases speed from 20 km per hour to 40 km per hour and takes 1 hour less than the initial time to cover certain distance. What is the initial distance covered by the driver? तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा 40 किलोमीटर. क्वेश्चन नंबर 101. Which among the following is correct action while driver approach an intersection that does not have traffic light or signs and traffic police? C is the right answer. Slow down, give way to the vehicle on the right side and proceed after giving necessary signal. Question number 102. The following figure showing a hand signal represents. D is the right answer. D is the right answer. Question number 103. The following figure showing a hand signal represents. C is the right answer. Stop traffic approaching simultaneously from front and behind. Question number 104. D option is the right answer. Stop traffic approaching from behind. Question number 106. Sorry, 105. इस फिगर में क्या आपको दिख रहा है? B is the right answer. Stop traffic from approaching. Stop traffic approaching from front. B is the right answer. Question number 106. D is the right answer. Intended to turn right or move out to the right hand side. D is the right answer. Question number 107. In the following figure, driver extends his right arm in a downward direction and keep moving up and down. Signal represents. C. Intended to slow down his vehicle. C is the right answer. Question number 108. The right answer is D. Option D is the right answer. Intended to stop his vehicle. Option D is the right answer. Question number 109. The motorcycle driver extended his left hand with palm facing down. The signal represents. B is the right answer. To take turn left side. Question number 110. In the following figure, driver extends his right arm and rotate it in anti-clockwise direction. A is the right answer. Intended to turn left or changing lane to the left hand. Question number 111. Among the following options, the use of traffic signal in a populated city is a rear end collision and delay increases. C is the right answer. Question number 112. D is the right answer. Option D is the right answer. Question number 113. You first drive 5 km towards the south and then turns to the right. After driving 5 km, he turns to the left and walks 3 km. Consider all the turning is 90-degree angle. What direction is? South is the right answer. B is the right answer. Question number 14. Which among the following is India's own GPS-like satellite navigation system? Option D is the right answer. Navic. Navic is the right answer. Question number 115. There was a traction pole at right angle crossing of two roads which was showing all the four correct directions, but due to an accident it turns in such a manner that now a pointer is showing south. Now car driver went to the wrong direction thinking that he was traveling towards east. In what direction he was actually traveling? B is the north. B is the right option. North is the right answer. Question number 116. Which color is usually used on a map to represent water feature? Blue is the right answer. C option. Question number 117. C option is the right answer. C option is the right answer.
क्वेश्चन नंबर 118, what does the following symbol mean? What does the following symbol mean? D is the right answer. Right turn and U-turn prohibited. Question number 119. What does the following symbol represent? B is the right. Sorry. C is the right answer. Width limit. C option is the right answer. Question number 120. What does the following symbol mean? A is the right answer. Steep ascent. Steep ascent is the right answer. तो ये था B सेट 120 क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी इसमें गलत लगता है तो आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हर एक पेपर में जो सर्च करना पड़ता है, किसी न किसी से सीखना पड़ता है, तभी जाके फुली सॉल्व करना पड़ता है, फिर आपकी वीडियो बन पाती है। तो मेहनत लगती है। कृपया सब्सक्राइब करें। आपका एक सपोर्ट मेरे को मोटिवेशन देता रहेगा। ऐसे ही मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। तो और भी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।